Good morning to all. I am Aman Naveed sir and welcome to Fajandar Junior College Vahur, Department of Sociology. We are started the 11th standard first topic, that is the introduction to sociology. First, I am welcome to in Fajandar Institute because you are getting the new admission in the Fajandar Junior College. And we have to study about the sociology. There is a very simple subject, that is theoretical subject, and very easy to learn, that is depend on the only society. That's why so easy. I am explaining this chapter or other chapters also in the three languages, that is English, Urdu and Marathi, because of every medium students are available for the sociology. That is a English medium also, that is a Urdu medium also, and that is a Marathi medium also. There is a very simple subject and there is no worry about the notes. You have to make one quire or two quire register. You have to write the synopsis means the headings and definitions, and the notes also, because the notes I am giving in your WhatsApp group in written form in JPG or PDF. And after that, the notes also available in the three languages, that is also English, Urdu and Marathi. And after that, you have to learning is very simple in the sociology. So we have to start, but I am explaining for the Urdu also. आज मैं आपका खैर मकदम करता हूँ फजंदार जूनियर कॉलेज वहूर. यहाँ पर आपने एडमिशन लिया, आप नए तुलबा है. यहाँ पर आज जो हम देखने जा रहे हैं 11वीं का पहला सबक जो देखने जा रहे हैं वो है समाजियात का तारुफ. मैं यहाँ पर आपको तीनों ज़बानों में समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास तीनों मीडियम के तुलबा और तालिबात होते हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम के. आपको एक या दो क्वायर का रजिस्टर बनाना है जिसमें आप नुकात लिखेंगे, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखेंगे, तारीफ़ें वगैरह लिखेंगे, और उसी के अंदर आपको मैं जो नोट्स आपको JPG या PDF के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो दूंगा वो भी आप जैसे के वैसे लिखेंगे. और इसके साथ साथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है, याद करने के लिए भी आसान है, क्योंकि ये हमारे समाज पर ही मबनी है, हमारे समाज पर ही ज़्यादातर इसके नुकात होते हैं. मराठी माध्यमांचे मुलांचं मी स्वागत करीत आहात. इथे आपण 11वी समाजशास्त्र हे विषयाची सुरुवात करणार आहोत. आपला पहिला जे घटक दिलेला आहे ते आपल्या पुस्तकामध्ये ते आहे समाजशास्त्राचा परिचय. याची आपण सुरुवात करणार आहोत. याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगून देतो, हे खूप सोपा सब्जेक्ट आहे, खूप सोपा विषय आहे, त्याच्यामध्ये काहीच अवघड नाही आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, 2 क्वायरचा एक रजिस्टर घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सिनॉप्सिस लिहायचे, म्हणजे जे बिंदू दिलेले आहे तुम्हाला व व्याख्या दिलेली आहे ते तुम्हाला लिहायची आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला जे नोट्स आहे, स्वाध्याय आहे, ते पण मी तुम्हाला लिखित स्वरूपामध्ये तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पाठवणार आहे. आणि ते खूप सोपं आहे, काय तुम्हाला इतका त्याच्या टेन्शन घ्यायची गरज नाही. तर फर्स्ट आय एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश. सो देर इज अ इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी. Sociology is normally started in the 18th and 19th century. First we have to see about the introduction. The sociology is started in the 18th and 19th century. After that, we have to see about the Auguste Comte is the father of sociology, because he used the first word in 1896. They are used the sociology first word in her book Positive Philosophy. So there is the various types of the sociology are seen in today's world. The sociology is started in the 18th and 19th century. The various types of the
factors are responsible for the giving the birth to the sociology, and there is a very huge subject that is also one of the branch of the science, and that is become the important subject for the society, because sociology study the society. That's why this is the very important subject for the society, and this is started in the 18th and 19th century. Sociology is giving the birth to the various types of the social problems and solving that social problem also. They are describe that problems are occurs in the society, and they are also giving the solutions of that problems also. That is why the sociology is very important. In the sociology we have to study about the villagers. In sociology we are study about the city peoples, and in sociology we are studies about the peoples are living in the forest. So we have to see. So there is very important subject in the sociology is various types of the introductions I am seeing here. Now we have to see about the definition. Now we have to see about the definition. The definition is given by Auguste Comte. The definition is: sociology is the science of the social order and progress. Sociology is the science of social order and progress. First, we have to see about the sociology is become by the two words. That is the we have to see about that word, socius and logos. Socius means companion, and logos means science. Socius means companions, means mixed to each other. In the society we are live in the mixing to each other, that is a companion, and logos means science. And the definition is: sociology is the science of social order and progress. Means in the sociology we have to see about the social order of the any of the society and the progress of the society. The progress is done in the any of the society. So that is a definition. Now we have to see about the nature of sociology. Nature of sociology. So there is a first nature is given in our textbook, that is a sociology is an empirical science.
There is a first nature of the sociology. Means sociology is an empirical science, means sociology is not a philosophy to sit on armchair and you have to sit in the one place and see the society or learn the society. That is not a sociology. Sociology is an empirical science, means you have to go to in the society and collect the information of the society persons or society's peoples. So that is the empirical science. Okay, so sociology is an empirical science, that is depend on the you have to go on to the place on the ground level and collect the information of the society. That is the one of the nature of the sociology. Second is sociology is an theoretical and applied science. Means the sociology is depend on theory and that is applied in the society. See, for example, we are seeing that there is a depend on theory, but applied is that we are seeing the different types of society. For example, village peoples, city peoples, and forest peoples. So there are the different type of peoples, and we have to go there and collect the informations regarding the villagers, city peoples, and the forest peoples. Means you have to see what is the nature of that peoples, and after that you have to apply in our life. That is the applied science. So sociology is an theoretical and applied science, that is depend on theory, and that is applied science because of they are applicable for the life and for the society. That's why sociology is a applied science. Now number 3, sociology is factual science. What is the meaning of that? Sociology is an factual science, means sociology is depend on fact, that is totally depends on the fact. So that is not a depend on the any of the person says you have to say that is not depend in the sociology. Sociology is depend on the fact. The correct is correct, false is false. Problems occur in the society, yes, problems are have in the society. The problems is not in the society, yes, problems are not in the society. Means print the correct picture like a mirror. Print the correct picture. That is the sociology is also sociology is depend on the fact, that is print the picture as it is like a mirror. So that is depend on factual science, that is depend on fact. Number 4, sociology is a holistic science.
Sociology is a holistic science. Means sociology studied the whole society. Holistic means whole society, not any part of the society. Means in the sociology you have to study about the city's peoples and not study to the villagers and the tribals that is live in the forest. That is not in the society. Sociology is an holistic society, holistic science. They are studies the society in whole, that is not in the single part of the society. So that is a words we are seen in the nature. Now we have to see in Urdu. सबसे पहले हम तारुफ देख लेते हैं समाजियात का. हम नए सबक की शुरुआत कर रहे हैं समाजियात का तारुफ. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तारुफ. समाजियात जो है वो 18वीं और 19वीं सदी में शुरू हुआ. अगस्त कौम को जो है बाबाए समाजियात कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए समाजियात को बढ़त मिली और इन्होंने ही सबसे पहले समाजियात लफ्ज़ अपनी किताब पॉजिटिव फ़िलॉसफ़ी के अंदर इस्तेमाल किया था, समाजियात. और बहुत सारे समाजियाती तारीफ़ें वगैरह इन्होंने बहुत सारी लिखी है. समाजियात जो है दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक सोशियस और एक लोगोस. सोशियस के मानी होते हैं कंपेनियन और लोगोस साइंस. कंपेनियन यानी मिलजुल कर रहना. जिस तरह हम सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं इसे कहते हैं सोशियस, और लोगोस जो है वो साइंस है. तो इस तरह से ऐसा होता है मिलजुल कर रहने वाला साइंस, इस तरह से इसे कहा जा सकता है. अब जो हम देख रहे हैं वो है समाजियात की तारीफ़. समाजियात की तारीफ़ जो है वो अगस्त कॉम्ट ने दी है, जिसका तारीफ़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. समाजियात एक ऐसी साइंस है जिसमें समाज और तरक्की के बारे में पढ़ा जाता है. समाजियात एक ऐसी साइंस है जिसमें समाज और तरक्की के बारे में पढ़ा जाता है. ये तारीफ़ अगस्त कॉम्ट के ज़रिए दी गई थी. अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है समाजियात की नोयत. समाजियात की नोयत में जो पहली नोयत हमें दी गई है वो है समाजियात एक तज्ज़ियाती साइंस है. यानी तज्जिया यानी जैसे हमें तजुर्बा करना होता है साइंस में, इस तरह से तज्जिए पर मबनी है समाजियात. जैसे हम आराम से कुर्सी पर बैठकर सीखे जाने वाला ये साइंस नहीं है. आपको समाज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना पड़ेगा, जैसे शहरों में, गांव में, और बहुत सारे लोग जंगलों में भी रहते हैं. वहाँ पर जाकर आपको मालूमात इकट्ठा करनी होगी किसी भी समाज में क्या मसाइल है और वो किस तरह से चलता है, उस समाज में क्या क्या हो सकता है, उसके मसाइलों का हल कैसे हो सकता है. ये आपको उस समाज में जाने के बाद ही पता चलेगा. इसीलिए समाजियात जो है एक तज्जियाती
साइंस है, समाजियात जो है तज्जिए पर मबनी साइंस है, तजुर्बे पर मबनी साइंस है। आपको तज्जिया करना होगा तभी आप समाजियात को समझ सकते हैं। दूसरा दिया गया है समाजियात एक इसे कहेंगे हम नज़रियाती और इतलाकी साइंस है। समाजियात एक नज़रियाती और इतलाकी साइंस है, यानी ये ज़्यादातर नज़रियात पर मबनी साइंस है कि आपके नज़रियात कैसे है, और ये इतलाकी साइंस है, समाज में इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर शहरी बिरादरी के बारे में देख रहे हैं और शहरी बिरादरी के हमें मसाइल पता चल जाए तो हम उन मसाइलों को हल करने की कोशिश करते हैं, ये समाजियात में हो रहा है। तो उसके इतलाक निकाले जा रहे हैं, उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं। तो इसीलिए समाजियात जो है एक नज़रिए पर मबनी है और इतलाकी साइंस है जिसे हम अपने मसाइलों को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा साइंस जो है समाजियात है। नंबर 3, समाजियात हकीकी साइंस है। मतलब समाजियात हकीकी साइंस यानी समाजियात हकीकत पर मबनी है, जैसा है वैसे के वैसे समाज को समाजियात दिखलाता है। अगर अच्छा समाज है तो समाजियात उसे अच्छा ही दिखलाएगा, समाज अगर बुरा है तो उसे समाजियात बुरा बताएगा। अगर कोई अच्छी चीज़ है समाज में तो उसे समाजियात अच्छा दिखलाता है, अगर बुरी चीज़ है तो समाजियात उसे समाज में बुरा दिखलाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं समाजियात हकीकी साइंस है, यानी हकीकत पर मबनी, जैसा है वैसा, ये किसी के कहने पर बदल नहीं सकता। अगर समाज में मसला है कि वहाँ पर सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, और किसी ने कह दिया कि नहीं ये मत बताओ, तो समाजियात ऐसा नहीं करता। समाजियात हकीकत को बतलाता है, जैसे आईना बतलाता है और जैसी पिक्चर हो वैसे ही प्रिंट करता है। तो आईने की तरह साफ आपको सही तरह से बताता है कि समाजियात क्या है। अगला जो है वो है समाजियात एक मुकम्मल साइंस है। समाजियात एक मुकम्मल साइंस है, यानी जिसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें हमें पढ़ने मिलती हो, किसी भी तरह से पूरी समाज को ये देखता है, मुकम्मल तौर पर देखता है, अकेले तौर पर नहीं देखता। जैसे हम समाज में समझ सकते हैं कि समाजियात पूरे समाज को मुकम्मल तौर पर समझता है, किसी को भी छोड़कर नहीं समझता। जैसे अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं समाज के बारे में, तो समाज में देहात भी आते हैं, शहर भी आते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग भी आते हैं। अगर सिर्फ देहात के बारे में पढ़ा जाए तो वो समाजियात नहीं है, अगर सिर्फ शहरों के बारे में पढ़ा जाए तो वो समाजियात नहीं है, और जंगलों में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ा जाए तो वो समाजियात नहीं है। समाजियात में शहरी लोगों के बारे में भी पढ़ा जाएगा, देही लोगों के बारे में भी पढ़ा जाएगा, और जंगलों में रहने वाले कबायली लोगों के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए समाजियात एक मुकम्मल साइंस है। नाउ फॉर मराठी। समाजशास्त्राचा परिचय हे आपला पहिला घटक आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे त्यामध्ये परिचय।
समाजशास्त्राची सुरुवात 18व्या व 19व्या शतकामध्ये झाली. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता समाजशास्त्र हे 2 शब्दावरून बनलेलं आहे, सोशस आणि लोगोस. कंपेनियन आणि सायन्स. कंपेनियन म्हणजे मिळून जुळून आपल्या समाजामध्ये राहणं, हे काय आहे? कंपेनियन. त्याच्यानंतर समाजशास्त्राची सुरुवात युरोप या जागेतून झाली. त्याच्यामध्ये फ्रान्स, त्याच्यामध्ये इंग्लंड, त्याच्यामध्ये जर्मनी, इथूनच ते पूर्ण विश्वामध्ये पसरला. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायची जे आहे ते व्याख्या, समाजशास्त्राची व्याख्या. त्याची व्याख्या अशी आहे: समाजशास्त्र असा विज्ञान आहे ज्यामध्ये आपण सामाजिक व्यवस्था आणि प्रगती चा अभ्यास करतात. समाजशास्त्र असं विज्ञान आहे ज्यामध्ये आपण सामाजिक व्यवस्था आणि प्रगतीचा अभ्यास करतात. म्हणजे समाजामध्ये कोणकोणती व्यवस्था राबवली जाते आणि कोणकोणती व्यवस्था आपल्या समाजामध्ये चालली आहे आणि प्रगती कशी चालली आहे आपल्या समाजाची, ते बघण्यासाठी आपल्याला समाजशास्त्र हे विषयाचा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचं आहे ते आहे समाजशास्त्राचे स्वरूप. समाजशास्त्राचे स्वरूप. समाजशास्त्राच्या स्वरूपमध्ये पहिला जे स्वरूप आहे ते आहे समाजशास्त्र एक अनुभवाधिष्ठित विज्ञान आहे. म्हणजे समाजशास्त्र आपल्याला अनुभवावं लागते. अनुभव आपल्याला जेव्हा येईल तेव्हाच आपल्याला समाजशास्त्र येईल. असा आराम खुर्चीवर बसून ते शिकवणारा सायन्स व विज्ञान नाही आहे. आपल्याला अनुभव घ्यावाच लागेल. आपल्याला त्याचा अनुभव घेण्यासाठी आपल्याला त्या जागेवर जावंच लागेल. म्हणजे आपल्याला त्या जागेवर जावं लागेल आणि त्याची आपल्याला जे समाजमध्ये जे घडलेलं आहे आणि जो घडतो आहे त्याची आपल्याला अनुभव घ्यावा लागेल, तेव्हाच आपण समाजशास्त्र शिकू शकतो. म्हणजे आपल्याला एखाद्या जागेवर खूप समस्या आहे तर आपल्याला त्या समस्या बघावं जावंच लागेल. आपल्याला फक्त आराम खुर्चीवर बसले आपण शिकले की हे ते समस्या त्या गावामध्ये आहे तर असं चालणार नाही. त्याला अनुभव करावा लागेल तरच आपण बोलू शकता की समाजशास्त्र एक अनुभवाधिष्ठित विज्ञान आहे. त्याच्यानंतर समाजशास्त्र हे एक सैद्धांतिक आणि उपयोजित विज्ञान आहे.
समाजशास्त्र हे एक सैद्धांतिक आणि उपयोजित विज्ञान आहे. हे समाजशास्त्र कशाचं विज्ञान आहे? सैद्धांतिक, सिद्धांतावर उपलब्ध असणारा विज्ञान. सिद्धांत व सूत्र जे असणार तेच ते समाजशास्त्र सांगणार, तर त्याला आपण बोलू शकता समाजशास्त्र कसा विज्ञान आहे? सैद्धांतिक आणि उपयोजित, म्हणजे जे उपाययोजना समाजामध्ये समस्या सोडवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे त्याचे उपयोजित सूत्र आपल्याला देणारा कोणता विज्ञान आहे? समाजशास्त्र विज्ञान आहे. ते आपल्याला उपाययोजना देणार. समाजामध्ये जे समस्या आहे त्याला सोडविण्यासाठी आपल्याला उपाययोजना देणार, त्याला आपण बोलू शकता की उपयोजित विज्ञान आहे समाजशास्त्र. त्याच्यानंतर तिसरी आपल्याला जे स्वरूप बघायचे आहे समाजशास्त्राचा ते आहे समाजशास्त्र हे तथ्यांवर आधारित विज्ञान आहे. समाजशास्त्र हे तथ्यांवर आधारित विज्ञान आहे. म्हणजे कोणत्याही समाजामध्ये जे समस्या आहे ते जसे की तसे ते समाजशास्त्रामध्ये ठेवले जातात. त्यांना असा कोणतीही भीती नसते की हे समस्या दाखवू नका आणि हे समस्या बोलू नका, अशी समाजशास्त्राला कोणाचीही भीती नसते. समाजशास्त्र हे तथ्यांवर आधारित आहे. जसे तथ्य असणार तसेच ते सांगणार. उदाहरणार्थ आपण बघू शकता की एखाद्या समाजामध्ये पाणीची समस्या आहे व गटारीची समस्या आहे व रस्त्याची समस्या आहे, तर ते तशी की तशीच समाजशास्त्र देणार. त्याच्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. ते कोणाला वाईट वाटो काय कोणाला कितीही त्याची आपल्याला किरकिरी होऊ त्याला कोणताही जबाबदार समाजशास्त्र नाही. ते तथ्य जे असणार ते तथ्यांवर आधारित असणार. त्याच्यानंतर आपल्याला चौथा जे बघायचं आहे समाजशास्त्र हे समग्र विज्ञान आहे. समाजशास्त्र हे समग्र विज्ञान आहे. म्हणजे पूर्ण त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे जितके विषय असणार ते विषय आपण तिथे शिकवू शकतात. त्याच्यामध्ये समग्र विज्ञान म्हणजे कोणताही एक समाजाचा एक पैलू ते न बघतात पूर्ण समाजाचा अभ्यास केला जातो समाजशास्त्रामध्ये. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की समाजशास्त्रामध्ये आपण बघू शकता की फक्त खेड्यांच्या लोकांचा व शहरी व नागरी लोकांचा व आपले जंगलामध्ये राहणारे लोकांचा अभ्यास कोणत्याही एका व्यक्तींचा अभ्यास केला न जाते. ते समग्र जितका समाज आहे त्याचे अभ्यास करतो. त्याच्यामध्ये खेड्याचे लोक असाल, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये नगरी लोक असाल, शहरी लोक असाल व जंगलामध्ये राहणारे लोक असाल, त्यांचं समग्र विज्ञान समग्र त्यांचा अभ्यास केला जातो. त्यालाच आपण म्हणू शकतो की समाजशास्त्र कसं विज्ञान आहे? समग्र विज्ञान आहे. तर
इथे आपला हे व्हिडिओ संपलेला आहे. धन्यवाद.